हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट टीसीएस कैपजेमिनी के लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट को लेकर। तो वीडियो में आप लोग जो है फ्रेंड इन तक जरूर बने रहना। और बता दो फ्रेंड, मेरे चैनल पर आप लोग को जो है इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट रेगुलर मिलते रहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को जो है दिन में कम से कम 3 से 4 बार जरूर विजिट करते रहना। और यहाँ पर आपको मैं रेगुलर अपडेट विद जेन्युइन इन्फॉर्मेशन विद स्क्रीनशॉट प्रूफ सब कुछ मैं आप लोग को दिखाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को प्लीज फ्रेंड एक लाइक आप लोग जरूर कर देना। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग जो है मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कॉग्निजेंट टीम की तरफ से ये अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए। You are receiving this mail as you are only few steps away from being onboarded. We would like to inform you that you will be lined up for FT onboarding on 27th April 2023। पहले ऐसे आप लोग को मेल्स आ रहे थे ना कि you are planned to be onboarded in the month of May, June, July, है ना। तो अभी फिलहाल जो है ज्वाइनिंग डेट सामने आ रहे हैं। ज्वाइनिंग डेट विल बी अपडेटेड इन द पोर्टल बिफोर 31st January 2023 मीन्स फरवरी, ओके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, okay, 3 months before they will update on your portal that your joining will be 27th April. Okay, however we would like to let you know that you will be available in India at the time of your onboarding so that you don't miss the opportunity for getting yourself onboarded with Cognizant. Meanwhile you may complete pending pre-joining formality, that is BGV document pre-joining form if any via the onboarding portal. Completion of this pre-joining formalities play a critical role toward a quicker and smoother onboarding. Okay, so next, congratulations on completing the pre-joining formalities, kindly await. So once you are going to complete your all the pre-joining formalities, document verification, BGV process, then you are receiving this kind of mail that congratulations on completing the pre-joining formalities, kindly await further email communication on your date of joining. Please log into one Cognizant 1C portal every day for regular update every day. Okay, next, so this is a new join date 2nd February 23 for all the pending candidates, all the remaining candidates for all the roles like iteration 1, iteration 2, iteration 3, cognigency pet, okay, ITPT role, whatever role you have. Cognizant is finally now releasing all the roles joinings. Okay, so once you complete these 3 things, your joining will be confirmed. All things you have to check if your these three tab review and accept offer, BGB document submission, pre-joining formalities is green or not. If these all things are green and completed, then you are going to join company as soon as possible, and this will be start on the day of your joining. Okay, and next, okay, and this is I think so this is a joining update. Okay, physical joining 5th January 23 for the Capgemini. And also please keep in this mind that like as per the communication on 12/12/2022 offer onboarding, you need to successful complete the adapt program. Okay, so as I already told you friend that Capgemini will never send you joining date without completing your stage 1 and stage 2 adapt exam. Once you are going to qualify adapt 1 exam and adapt 2 exam, then only they are going to give you onboarding date. If you are failing in any of the exam, either a stage 1 or a stage 2, you are not going to be onboarded by the Capgemini team. Okay, so please keep these things in your mind always while you are waiting for the joining dates, and if you are preparing and giving the exam of the stage 1 and stage 2 of the adapt. Okay, so this is a very थिंग लाइक ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कैपजेमिनी का ज्वाइनिंग डेट है, फिजिकल आपका होने वाला है, लोकेशन सब कुछ मेंशन किया गया है, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह सब कुछ बता दिया गया है। ठीक है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या ट्रेनिंग होगा। ठीक है, और टीसीएस के जो ज्वाइनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। दो ज्वाइन डेट सामने आ रहे हैं फ्रेंड, पहला है आपका 23 जनवरी। अगर इसके अलावा कोई डेट्स आपके पास आए हैं टीसीएस वालों तो प्लीज़ कमेंट कर देना आप लोग, ताकि लोगों के पास और भी अपडेट्स मिल पाए। मेरे पास 2 ही डेट सामने आ रहे हैं। 30 जनवरी को ज़्यादातर लोग जो शेड्यूल वाले लोग उनका ज्वाइनिंग होने वाला है, और जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग उनका भी ज्वाइनिंग है। 23 वालों में भी काफ़ी लोग के ज्वाइनिंग्स होने वाले हैं फ्रॉम दी 2020 बैच टू 2022, एंड 2023 बैच का भी ज्वाइनिंग नहीं होने वाले हैं। आप लोग के 2 से 3 महीने बाद ज्वाइनिंग होंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो आई थिंक दैट इट फॉर वीडियो। इसके अलावा कुछ डाउट्स है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।